Knowledge is power, but mere having knowledge is not sufficient. One should able to know how to apply that knowledge. We as an organization believe in knowledge and constant growth. मैं आरसी चौधरी 78 में कॉलेज छोड़ने के बाद फरीदाबाद आया और यहाँ एक कंपनी में एज ए सुपरवाइज़र का काम शुरू किया। 3 साल के बाद मैं उस कंपनी का वर्क्स मैनेजर बना। 82 में हमने छोटा सा काम ट्रेडिंग का शुरू किया, जिसमें डिवाइसेस का और विनाइल फ्लोरिंग वगैरह का काम था। 92 में हमने मल्टी डेकोर की स्थापना करी और उसके बाद में पहला ऑर्डर हमें फोर्ड इंडिया लिमिटेड से 7 लाख का ऑर्डर मिला। फिर दूसरा ऑर्डर एस्कॉर्ट्स ग्रुप से मिला, फिर BXL इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल और धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां इस तरह से हमारे साथ जुड़ती गई और हम जोड़ते चले गए प्री फैब में। 2009 में प्रदीप IIM इंदौर से पढ़ाई करने के बाद में वो हमारे कंपनी के साथ में जुड़ गया। I completed my executive MBA in 2010 and decided not to work for anybody else, and I joined Multi-Decor. In 2012, company was transformed from Multi-Decor proprietorship to private limited. Until 2015, company was growing at a steady pace but on a constant number, not a multi-fold jumps. It was a stagnant phase. We were not on a big numbers. In 2015, I was away from the organization due to some illness. Once I joined back, I realized company should run as a well-oiled machinery. It should be on autopilot. It should not be dependent on a person. So I started designing systems and processes. From 2016 till 2018, growth was better due to some processes, but again, the knowledge is always limited. I felt the need of learning. In 2018, there was ad by IMSME of India for Mission 5X, which resonated with my plan for growth and automation. IMSME introduced us to School of Inspirational Leadership, where we underwent numerous programs. Journey started with Burning Desire, where the context was set right by orienting us as a business leader. The very important lesson which was taken aback was owner and business is totally separate entity. They were two different things. The second session of strategy taught us how that growth path can be achieved. A business plan was made. There were numerous sessions and numerous learnings. All were taken back and taught to our core team in the organizations. This financial year, we have taken a jump of 90%. And for the next financial year, we have set up a target of 120%. SIL is a true partner in your growth. They not only impart you the knowledge, but also handhold you through the all complete process. I can personally guarantee entrepreneurs who wish to take up this journey that your journey will not only be rewarding but a life-changing one. You are unique. You are passionate. SIL salutes the rigor and dream within you. We promise to be a strong catalyst in your life. Business will come automatically if I make people life secured. See, Safe House Security started in 1994 with a vision of to make the people secured. That is how the name of the Safe House Security has evolved. I passed out in 1986, but with a very small scale of say 5 to 10,000 rupees, we started a business. The initial vision was to save water, and I took that as an opportunity. The product named is water level controller. Then I myself thought that this is not enough in a business. We must grow. So I started targeting for the security products, and that is how the CCTV security products came into a picture. I was the first person in Pune who started installation of security products. When I took the cameras and showed the many people, they were not ready to accept as a product. But I took over that challenge and sold several places. We sold cameras. Okay, and fortunately in 2016
we came across with SIL. I went for a seminar and really I was surprised to see that I am lacking somewhere in a management. Like I learned from them how to delegate the people, what is the leadership quality, how to manage the people, then how to read the balance sheet. See, the best part which I studied in School of Inspirational Leadership is what is your vision. So I really defined my vision statement during those programs, and our vision statement is very very clear. Whoever is associated with my company Safe House Security, he should feel secured. First thing is secured, and then once he gets the security, he should be very comfortable. Then in the last seminar, I listened from Dr. Pawar about our blue ocean strategies. When we have reached to a one stage in a business, there is nobody around. You should start shifting the business to some other level. So all my staffs are now associated with the SIL group. They are regularly attending the classes, and I've been finding out good changes in my company. I mean, there are so many good friends now, entrepreneur friends are there with me. And I hope this journey will continue. And I can foresee that in 2018 or 19, we will definitely a number one company in Pune market. You are unique. You are passionate. SIL salutes the rigor and dream within you. We promise to be a strong catalyst in your life. पहले ग्रोथ प्लान नहीं था मेरे पास, चल रहा था बिजनेस जो चल रहा था. आज टुडे आई हैव ग्रोथ प्लान विद नंबर्स, which I did not have previously. That is the major difference. And otherwise it was a very good and nice experience. Look forward to gain more and more for further future sessions. Thanks. I'm Kaushal Thakkar. एंड आने से पहले मेरा माइंड में क्लियर नहीं था कि मुझे अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, बट नाउ आई हैव अ क्लियर आइडिया, आई हैव अ फिगर इन माइंड एंड आई एम क्वाइट क्लियर लाइक आई हैव टू अचीव दैट फिगर. इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई एम होपफुल दैट आई विल अचीव द टारगेट्स व्हिच आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ एंड माई कंपनी. We have taken our vision as prosperity through automation. We have started our business in 1997. For first 2 years, we were doing servicing for CNC machines in and around Pune, and we were committed to give services for CNC machines within 24 hours from the breakdown. Afterwards, in 1998, we have started retrofitting and reconditioning machines with CNC controllers, and both of us are not having a business background. This is first generation business, so their resources are also limited, and we don't have any financial support. And in 2002, we get one opportunity from HEG Bhopal, and we have completed that project, and it was a benchmark project for us. In 2007, we have started for Siemens drives, motor, motion controllers, distribution and projects in CNC. Basically, we were growing for last 20 years, but the growth was not sufficient. We were not happy with our growth, and in that phase, we come to know that SIL is
governing some program for entrepreneurs in and around Pune for development of their businesses. So we have decided to join SIL, and the very important session for us was the Burning Desire session, which was held in Mahabaleshwar for 3 days. At that session, we got our vision, mission statement, and our goal. We have decided our short-term goals and long-term goals, and then we have percolated all these system in our employees, and we see the results. Within 1 year, we have the growth of 30%, and now this year also we are growing, and our total business philosophy, looking at various perspectives, has totally changed, and we think we are now on the right track, and we will grow faster and faster, and we will achieve our goals shortly. You are unique. You are passionate. SIL salutes the rigor and dream within you. We promise to be a strong catalyst in your life. Every business wants to grow. To have a clear strategy in which direction it is going to grow, in which area we want to expand. These are all the insights provided by SIL. Our journey started way back in 1983 as a typical, you can say, garage startup. My father started the company, and in 1989 the company got converted into private limited company. During that time our factory used to be at Y near Satara. We are really proud to say that we have pioneered this technology in India. Though the flow of inquiries and everything was there, growth had been slightly stagnated, or slightly, the pace of growth had reduced. So during that phase only, I came across SIL. I sensed something different into their communication, and it was during the first session of Burning Desire only. I got completely convinced that my decision was right. Main takeaways from that program was, yes, obviously the identification of value systems, goals, mission, vision. Definitely I see the direction has changed. The quality of discussions within our organization has also, one can say, it has got transformed. So far it has been a very exciting journey with SIL, and one of my, you can say, social activities is I am one of the founder member of an NGO called Jeevit Nadi Living River Foundation. This foundation actually is working on a mission of revival of rivers, and presently we are focusing our efforts on Pune's Mula Mutha River. And I feel that this SIL's insight has also helped me and all our team working for that cause into bringing more clarity. The bigger the goal, I would say SIL's inputs are going to be with me, and will be helping me into achieving those bigger goals. SIL is doing, I would say, really a hand-holding for people like us. You are unique. You are passionate. SIL salutes the rigor and dream within you. We promise to be a strong catalyst in your life.
Gurukul, outstanding. Vaccine, mentor, great. booster dose, eye opener, wealth creation factory, school, Progressive handholding, directive, life changer, way to direction, great support. profound motivator, inspiration, Adventure, catalyst, navigator, development consultant, school of life, university for entrepreneurs, growth catalyst, dictionary of motivation, mentor, catalyst, business trigger, guide, lighthouse. Positive vibe to many beginners like us. These 8 days were very good. The forward 80 days or 800 days are going to be very hard. The course and the teacher and his experiences, without asking you do that, he made it do it. जितना भी thank you आप SIL को तो कम ही पड़ेगा. I will recommend this program for many more friends of mine, families of mine who really want to have this journey. खरं सांगायचं तर हे 8 दिवस आहेत ना कसे गेले कळत नाही. म्हणजे फ्रँकली सर टास्क द्यायचे उद्या हे करून या म्हणायचे. सेशनला असं मस्त वाटायचं की हा आपण हे केलं आणि हे चांगलं झालं आपल्याला. ओवरऑल छान एक्सपिरियंस. तो 8 days हम लोग को ऐसा लगा कि what we are learning basically, और आज जो complete जैसे लगा was quite amazing. It is a lot of learning. You can say I decided to use this break time to sharpen my skills. But all these trainings and sessions, whatever I did during this pandemic, online training, almost all online, I think all of that training, the conclusion of that all trainings I got in this particular session, in these 8 days. So now it is time, my learning time, kind of, I will stop now and it's time to act. Yeah, I have skill, I have knowledge, everything is there, but what I didn't have vision and mission proper. So that is very important. योगेश सर का जो पकड़ के रखने का जो एक टेक्निक था, वो स्पीच को 1.5 घंटे तक या 2 घंटे तक हमारे को कहीं भी ऐसा क्या बोलते बोरिंग कहीं नहीं लगा. उन्होंने ऐसा एक पकड़ के रखा हमारे को पूरा, यानी क्या बोलते उसको, एक उन्होंने एक अलग सी एक पर्सनालिटी उस टाइप की. तो ये ओवरऑल एकदम अच्छा सफर रहा. बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया और कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि हम हमारा टारगेट चेस करेंगे. Sir, it's a wonderful session. No flawless, not even a single minute wasted. The way he was, he's a pearl connecting all of us. Each and every session is fantastic. When he is with us, I think we can easily reach our target. We are like a family and he was leading us. Whatever example he is stating, giving, it holds good for each and every one of our businesses. सर बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा. हम लोग जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो मेरे को नहीं लगा था कि हम लोग इतने अच्छे प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं और हम लोग को इतना बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा. इट्स वाज ए वेरी वंडरफुल, और ये आई ओपनर जैसे था कि कई एक चीजें जो हम लोग कर रहे हैं हम लोग को पता नहीं है कैसे करना है क्या नहीं करना. तो सर ने काफी इन डेप्थ समझाया और काफी अच्छा प्रोग्राम रहा है. Actually, there was the guidelines which was very much eye-opening. बेसिक जो चीज़ें होती है वो हमें खुद को पता नहीं है. तो वो जैसे हमारा विजन क्या होगा, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती है. ऐसा नहीं है कि हर आदमी अपने बिजनेस के बारे में सोचता है, बहुत प्लानिंग्स भी करता है, लेकिन उसको जब पेपर पे लेके आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें करना क्या है और क्या हमारा रोड मैप होगा. वो इस सारे सेशन से हमारा क्लियर हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे हम इसमें कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास एक विज़न है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है
हम उसको देख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, अपने लोगों को सबको साथ में लेके टीम बना सकते हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छा रहा। बहुत बड़ा विजन दिखाया, बहुत बड़ा व्यूज दिखाया कि जो हम नहीं देख सकते थे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लिमिटेड नजरिया रहता है और उधर तक ही देख पाते हैं, लेकिन जो दिखाने का आँख है, बहुत बड़ा दिखाने का जो आँख है, वो योगेश सर ने दिखाया। योगेश सर के गाइडेंस से अभी मैं पहुंच सकता हूँ, मैं जिधर जाना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, ये मुझे आइडियाज मिल गए कि अभी 8 दिन में आपने बहुत अच्छा डिश हमको खिलाया, अभी कल से हमको कौन खिलाएगा? दिस पर्सन हैज डेफिनेटली बिल्ड अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन विथ ऑन वेरी गुड वैल्यूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइडेंस हमको मिला है, वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट, but while implementing we may do a lot of mistakes, and that time we need hand holding of Yogesh sir. It was really a great experience to share time with all of you. Thank you very much sir. I think you had a deep understanding of each and every person who was attending webinar. It was really helpful, sir. Few things, but few right things. Yes, for my next future, all the years. Few of the bases that are required for my next future, all the years. Gives the clarity in which lines strictly recommended for the before starting the business. In the initial stages only, you are going to move forward in the business. This is the program is recommended before start the business. This will help gives the clarity in which lines. Concepts and certain things I came to know. Somehow I got my breakthroughs from this training, but it is a continuous journey in any way. Now I know the actual meaning of what is vision, what is mission, and how this is very important to our business. बहुत ही ज़्यादा knowledgeable session. I'm sure you are the one who can solve all those problems. There is nothing mission impossible now because we got that formula. उसको vision mission बना लो, अपने आप उसका बन जाएगा. Now I feel I'm more young. My perception about myself that I've missed a lot of things is slowly going away. A confident feeling is coming out. This has been my biggest takeaway, getting more confident from inside. You know, I joined this session. I was very excited. The fear factor has gone. All thanks to Mr. Yogesh Pawar. एक ही वर्ड बोलूंगा, डेडिकेशन। आपने जो ये दिया जलाया है इसको पूरे भारत में लेके जाए। इट इज द नीड ऑफ द आवर। एक दिन मैं ऐसी कंपनी खड़ी करूं जिसे इंडिया को प्राउड हो। जो फ्रेमिंग करण्याचा विषय आहे, कधी कधी आम्ही कमी असतो, तर त्यामध्ये तुमचं सजेशन जे ते आमच्यासाठी व्हॅल्युएबल झालं. गुड एक्सपिरियन्स. Overall experience was quite good. Had expected it would not go to this particular level. Initially I was like skeptical, but this was like a pretty surprise for me. Something important which are required for our business or the entrepreneurship to go smoothly and to conduct it quite efficiently. These two were like very important takeaways for me. The entire journey of this last 8 or 10 sessions was really encouraging us. We comes in interaction with you. वो चीजें बहुत जल्द से जल्द होने लगी. When we have decided we have to hit that target, they are getting the opportunities also.
Good evening, everybody. Good evening, everybody. You may want to just quickly, my name is Yogesh, and I'm going to be your conductor of the facilitation of the next 45 minutes. Good evening, everybody. Good evening, Satish ji. Good evening. Can we quickly say good evening to everybody and on the chat box? Let's do this. Let's say good evening to everybody. All right, and let me ask all of you, how are you? I hope you're doing great. I hope you're doing great. Go ahead. Good evening. There are some old friends who've joined in. There are some new friends who've joined in. So welcome everybody. Jugalji, welcome back. Thank you very much for joining in. Good evening, beautiful people. Wonderful, Samitra. Thank you very much. That's how you got to speak, right? Go ahead. I don't know if Mukesh Gupta is the same Mukesh Gupta from Delhi. Do confirm if you're the same person. Of course, it feels nice when you have people known in the group. So Nitesh, good evening to you. Good evening. Good evening, Chetan. Volume come hai. Okay. Okay. Let me. Himanshu, I hope volume up sahi hai. Great. Wonderful. Very nice. So we're going to wait for say a couple of Lokesh, good evening. A couple of minutes more, but before we should not lose this opportunity of introducing ourselves, introducing our business. There's a lot of known and unknown people here, and they might need our services. They might need some work from us. They might probably need some assistance. So go ahead and quickly introduce yourself, the business name, and the location you've joined us from. Business name and the location you've joined us from. Come on, quickly. I'm waiting for you. Quickly do that. Go ahead. Wonderful. People have started writing it down. Awesome. Go ahead. Keep doing that. Keep doing that. Okay. Wonderful. Satish ji is from Pune, Exim, and you're doing exports and import. Okay. Sneha is agencies clinic. Okay. In Khanna. All right. Okay. We have people joining in. Teaching in Bahadurgarh. Okay. Hastakala in Delhi. Wonderful. Jugal ji, I know your business. Lokesh is from Handcraft, from Jodhpur. A lot of business owners have joined in today, and I would definitely want to ask people, have you ever heard about something called as balance scorecarding? Have you ever heard about something called as balance scorecard? Go ahead and respond. Yes or no is the answer that you have to tell me. Yes or no. Balance scorecard का मतलब क्या है? क्या आपने ये सुना है? आपने नहीं सुना है? Go ahead. I'm waiting for your responses. Look. No. All right. A lot of people have said no. Okay. Professional astrologer myself, starting an online pre-recorded video teaching platform in Bengali for Indian sciences. Wonderful. Very nice. Very nice. Okay. Samitra, welcome. I mean, I'm very happy that you are a part of this the session, and I'm sure you will learn a lot out of this, which will help you to become better. Okay. So while I'm going to talk about balance scorecarding today, I'm going to take you through a different process of where is balance scorecard used. Okay, where is balance scorecard used? Now, important for all of us to understand is, first of all, why do we need a balance scorecard? Okay, why do we need a balance scorecard? Okay, so I'm going to show you certain images. These images will probably help you to understand the different methods that we have to pick up in order to ensure that balance is created in the organization. Now, what kind of balance? This is the
Next question. What kind of balance do we need to build? We need to build a balance between emotions and economics. Okay. How many of you like what I said right now? There has to be a balance while we are growing the organization between emotions and economics. So if I say that I have a weight balance machine, fundamentally there has to be a balance between emotions of the organization and economics of the organization. All right. So go ahead and just tell me whether I'm making sense. Yes, no, all right, no, you're not right. Yes, you're right. Go ahead. It is a fine balance between economics and emotions. Okay. So while you are trying to build that balance between emotions and economics, I would strongly urge you to see the perspectives that are required to build a balanced scorecard. Okay. To build a balanced scorecard. Now, when we say to build a balanced scorecard, what does that mean? There is a small image that is coming in front of you. Have a look at that. It means the vision and the strategy aligned to customers, financials, internal business processes, and learning and growth. There are 4 elements that we're talking about. 4 elements. My vision and my strategy that is linked to my financials, internal business processes, learning and growth, and customers. Okay. Now, once you create this balanced scorecard, for everybody in the organization is focusing only on one thing. Now, my next question to everybody here is, how many of you have a drafted vision and a drafted strategy? Sure, Soumitra, I'll do that. I'll do that in the next time. How many of you have a written down strategy and a written down vision of where do you see your company next 5 years? Okay. Where do you see your company next 5 years? Do you have a written down document for it? Go ahead and respond to my question. Go ahead. So there's only one person who's written it down. There are 2 people who've written it down. Go ahead, keep writing, keep saying that. Check. If you've done that, if you've not done that, it's absolutely okay to accept the truth, because only then we will probably move forward in the journey of our entrepreneurship, right? So if people have not written down, my humble request to everybody here is start writing down, start building down a scientific statement. It's not just मेरे को दिमाग में आ गया तो मैंने कर लिया या ये विजन है मेरा. No, there is a science to it. Learn the science and implement the vision. For a simple reason, जब बैलेंस स्कोर कार्ड सही बनता है, आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हो, आप अच्छे लोगों को रिटेन कर पाते हो. I'll tell you why is it so critical. Balance scorecard is a strategic tool that is required to attract right people in the company and then build up a retention methodology that helps your good people, your performing people to stay in the organization. And if your vision is wrong, or if your vision is not concrete, if your vision is not written down well, and you do not have a strategic plan backing that up, you may fail in giving all the objectives to people. And then every time, either you hire wrong people or you get people and probably are not able to give them the task that they can perform. Okay. So I have a question, a small poll for all of you. Let's have the clarification done for everybody. Let's have a clarification done for everybody. Here you go. The poll launches for you. Vision and vision is same. This is the first question. Is it true or false? Please write down. Scaling up depends on vision and values, execution, cash strategy, or all of it. None of the above or all of it. I do use strategic tools and as management practices in my company. Yes or no? Yes or no? So these are 3 questions that probably we need to answer
The polls have started coming up. We've almost crossed 13-15% of it, 16% of it. Very good. Keep moving forward and try finishing the poll, because you will get your own understanding of this rather than me talking about it. Okay. All right. We've completed. We're moving forward. Go ahead. Quickly try solving this. All right, we've crossed. Go ahead, keep doing it. Last few people pending. I'm going to keep the poll open for the next 30 seconds. Try completing it. And I'm going to share the results quickly. All right, last 10 seconds to go. The poll is going to close off. 5, 4, 3, 2, and 1. Here you go. I'm going to share the results with all of you. Have a look at the results. The result says 87% of people feel it's false, and that's right answer, by the way. For 13% people who feel that it's the same, there is something that needs to be learned. And the answer to this is vision means where. Where का जवाब, कहाँ जाना है का जवाब vision है. Mission का मतलब है क्यों जाना है. Why do I want to reach where I want to reach? And where do I want to reach? There are two questions, integral, that need to be answered before you start your scaling up journey. Scaling up depends on 13% people say value and vision, 7% say execution, nobody says cash, and that's a good thought process. 7% of them say strategy, and around 80% of them says all of the above. Yes, the answer is all of the above. You need your vision values, you need your strategy right, you need your cash right, and you need your execution right. Ab cash is the last part of it. सबसे पहले vision mission है, strategy है, people है और cash है. Execution में people आ जाता है. Right? Now, in order to solve this khichdi of scaling up, you need tools. It's a complex element. Scaling up is a complex activity. A lot of things work in a simultaneous way, जिस वजह से बहुत बार confusion हो जाता है and we are not able to track. Balanced scorecard is a method where you can track, measure and monitor your people whether they are on the right track of achieving the vision of the organization. So ये पोल मैंने इसीलिए करवाया आपसे ताकि आपको ये समझ में आए कि ये टूल यूज कहाँ करना है. ये बहुत जरूरी है, राइट? ये टूल यूज कहाँ करना है. सो ये टूल यूज कहाँ करना है? क्विकली, जब आप अपना विजन मिशन लिख लेते हो, उसकी इनिशिएटिव्स लिख लेते हो, उससे मेजर, मॉनिटर और ट्रैक करने के लिए, डेवलपमेंटल इनपुट्स देने के लिए यू यूज a method called balanced scorecarding. Okay, so how many of you are clear on your chat box? You might just write C, which means you're clear. Okay, just write C, you're clear where to use it, fundamentally where to use it. That's very important that you learn where to use it. Okay, just write down C, which I will understand. Okay, that you clear about where you want to write it. Because so first input उसके लिए क्या है? आपका विजन, मिशन और स्ट्रैटेजी. अगर ये नहीं है तो बैलेंस स्कोरकार्ड बना ही नहीं पाओगे. Okay, Shubham, I do not know what is NC. Actually, not clear probably. So Shubham, just to answer this, अगर आप हिंदी या इंग्लिश समझते हैं, so I'm trying to speak this in Hindi now. जब मेरे पास मेरा विजन और मिशन होता है, उसकी लिखित स्ट्रैटेजी होती है, उस स्ट्रैटेजी पे जब मैं काम करना शुरू करता हूं, तब मुझे मेजरिंग, मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम की जरूरत होती है. जैसे गाड़ी में रेडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, फ्यूल मीटर होता है. अगर ये सारे मीटर्स नहीं है तो आप गाड़ी कैसे चला रहे हो आपको पता नहीं चलता. फिर गलत क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता. तो इसी ट्रैकिंग का नाम बिजनेस में बैलेंस स्कोरकार्डिंग है. ओके, शुभम, you can tell me now it is clear. Welcome, Dr. Jagdish. Thank you for joining in.
Thank you. You joined from Bhubaneswar. Thank you very much for joining it. Right. So, उसे कहते हैं balance scorecard. Shubham, are you clear? Just let me know so that I can start on with helping everybody understand the tool. Wonderful. Thank you very much. Now that takes us to learning the tool. That takes us to learning the tool. कि ये tool किस तरीके से हमें use करना है. Market में हमें इसे use कैसे करना है. Market का मतलब हमारी संस्था में. Okay. So give me a moment and let me open up my presentation for all of you. So just confirm if you can see my screens. Just confirm if you can see my screens. On your chat box right now, you can write Y. Wonderful. Very nice. Thank you. So let's first understand vision का मतलब समझ गया, mission का मतलब समझ गया. Let's understand strategy. Strategy is a plan of action to bring about the desired future in line with culture and ideology of the organization. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि मेरा जो विजन है, मेरी जो वैल्यूज है, मेरा जो मिशन है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक्शन प्लान बनता है, उस एक्शन प्लान को स्ट्रेटजी कहते हैं. और जब आप ये तीनों कर लेते हो और एक स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार होता है, उसी से बाहर निकलता है मेरा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. It comprises of several activities to produce output required to achieve a plan. Strategic objectives relate to outcomes that strengthens the organization overall business position and competitiveness. So अब एक नया वर्ड आ गया जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. अब ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है कि ऐसी एक्शंस जिसके वजह से मेरा बिजनेस की पोजीशनिंग, मार्केट पोजीशनिंग स्ट्रांग होती है और मैं कॉम्पिटिटिव बनता हूं. कॉम्पिटिटिव बनता हूं का मतलब क्या है? एम्प्लॉइज को सही सैलरी दे सकता हूं, या सही लोग ला सकता हूं, या मार्केट में प्राइसिंग सही करी हुई है, या ब्रांडिंग मेरी सही है, या मेरे प्रोसेसेस सही है, जिसकी वजह से मेरा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है. जैसे अगर आपकी इंटरनल प्रोसेसेस स्ट्रांग है तो आपकी कॉस्ट पे इंपैक्ट आएगा और वो कॉस्ट का पॉजिटिव इंपैक्ट होगा. ओके. सो इस तरीके से दो चीजों की वजह से यू नीड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. That strategic objectives will strengthen only two things: business positioning in terms of your money, in terms of your processes, in terms of your learning, in terms of your hiring, and competitiveness उससे बढ़ेगा. मतलब क्या है? आपका प्राइस अच्छा रहेगा, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी, आपकी अवेलेबिलिटी सही रहेगी, and all of that. Now let's understand how do you create a strategic map, and this is where the balance scorecard comes in picture. This is where the balance scorecard comes in picture. Now what does that mean? तो जब भी बिजनेस में कोई एक्टिविटी हो तो आपके हाथ में ये चार पर्सपेक्टिव्स होते हैं. एक है सीखने की प्रक्रिया, क्योंकि जिस संस्था में सीखने का सिलसिला नहीं है उसमें नई आइडियाज नहीं आती, नया इनोवेशन नहीं होता, उसमें नई नई चीजें इंप्लीमेंट करने का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं आती. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, एक फायर होती है जो फायर देनी पड़ती है. अगर किसी भी इंजन को चलाना है तो आग देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, फ्यूल देना पड़ता है. वो फ्यूल जो है वो लर्निंग और ग्रोथ है, क्योंकि इंसान के दिमाग में जैसी जैसी नई नई चीजें आती रहती है वैसे वो नई नई चीजें करते रहता है. ओके. सो इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ योर बैलेंस स्कोरकार्ड इज लर्निंग एंड ग्रोथ. ओके. दिस इज किस तरीके से हम अपना विजन, जो भी चीजें हमें विजन को अचीव करने के लिए चाहिए, क्या मेरी संस्था में उसकी एबिलिटी है? क्या मेरी संस्था में उसकी एबिलिटी है? अगर क्या सबसे पहला सवाल ये पूछना कि क्या मुझ में वो एबिलिटी है. इच्छाएं रखना, आकांक्षाएं रखना, ड्रीम्स रखना इज नथिंग रॉन्ग, प्रोबेबली इट इज द राइट स्टार्ट. बट उस ड्रीम, उस इच्छा को, आकांक्षाओं को, गोल्स को अचीव करने के लिए अगर हम में वो एबिलिटी नहीं है,
या हम समझते हैं मेरे पास वो सारी एबिलिटी है पर मार्केट साथ नहीं दे रहा, एम्प्लॉय साथ नहीं दे रहे, पैसा नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो ये हमारी प्रोबेबली देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश कॉल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग है, या हिंदी में उसे गलतफहमी कहते हैं। ओके, ये शायद गलतफहमी है। तो अगर जो बंदा, जो बिजनेसमैन उस गलतफहमी में है, उसके लोग भी उसी गलतफहमी में है कि हमें सब कुछ आता है, तो नया कुछ बनता ही नहीं है। और जो भी एंटरप्रेन्योर, जो भी बिजनेस ओनर लर्निंग एंड ग्रोथ को एम्ब्रेस नहीं करता, रादर प्रोफेशनल लर्निंग एंड लर्निंग और ग्रोथ को एम्ब्रेस नहीं करता, ही विल ऑपरेट हिज कंपनी इन प्रेजेंट, वर्तमान में ऑपरेट करेंगे। बट फंडामेंटली अगर आपकी संस्था के लीडर हो, आपकी संस्था आपने फाउंड करी है, आप फाउंडर हो, डायरेक्टर हो, तो आपको संस्था के फ्यूचर के लिए काम करना है। क्योंकि जब आप फ्यूचर में काम करते हो तभी जाके आपकी टीम प्रेजेंट में काम करती है, क्योंकि लगातार उस टीम को नई नई चीजें आप देने की कोशिश करते रहते हो, उनको रोड मैप देने की कोशिश करते रहते हो, बिकॉज योर जॉब इज टू होल्ड द टॉर्च एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, सो how many of you agree with the statement that I made, that if you are in future, only then your team remains in present or remain in present? Okay, write down yes or no. अगर आप फ्यूचर में हो तभी आपकी टीम प्रेजेंट में रहेगी, अगर आप प्रेजेंट में हो आपकी टीम पास्ट में रहेगी, और आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। ओके, सो फ्यूचर का पर्सपेक्टिव आपके पास पहला होना चाहिए, और आपकी प्रेजेंट आपकी टीम ने हैंडल करना चाहिए। सो गो अहेड एंड राइट डाउन, एम आई सेइंग इट राइट, एम आई नॉट सेइंग इट राइट, व्हाट इज इट? लीडर मस्ट हैव अ विजन, यस, साइंटिफिकली क्राफ्टेड विजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज जस्ट नॉट अ स्टेटमेंट। I think Dr. Jagdish, you joined us a little late. I explained what vision is. There has to be a scientific way of doing it. It cannot be just an idea that's come to my mind, then it's an idea. A method to get converted that idea into a very emotional and economical viable vision is very important. Okay, so wonderful, thank you very much. I hope people have agreed to what I said. Now, important here is to understand these four perspectives. So learning growth, why is it so important and critical, is what we need to learn. Let's move on to the second part of it. The second part of it is internal business processes. Now, ये क्यों इतना जरूरी है कि हम इंटरनल प्रोसेसेस पे ध्यान दें? वो सारी चीजें जिस वजह से मेरा कस्टमर सेटिस्फाई होगा या डिलाइट होगा, वो सारी चीजें जिस वजह से मेरा कस्टमर या मेरा सेटिस्फाई होगा या डिलाइट होगा। तो मैं आई एम गोइंग टू टेल यू सर्टेन वर्ड्स नाउ। ओके, सो व्हाट आर द वर्ड्स दैट आई विल टेल यू? द फर्स्ट वर्ड दैट आई टेल यू इज चेक योर अवेलेबिलिटी। आप अपने आप को पूछिए कि क्या मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस हर जगह अवेलेबल है। स्केलेबल करना है ना उसे, तो हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए, बहुत लोगों ने खरीदना चाहिए, तभी तो जाके सेल होगा। ओके, क्या मैंने ऐसे प्रोसेस लगाए हैं कि वो हर बार अवेलेबल होता है? पहला सवाल, ये इंटरनल सवाल, ये कहीं बाहर का सवाल नहीं है। क्या मेरे पास मेरी वेबसाइट है? क्या मैं ई-कॉम पे अवेलेबल हूँ? क्या मैं सर्विसेज पे अवेलेबल हूँ? क्या मैं जस्ट डायल पे अवेलेबल हूँ? क्या मैं ब्रोशर्स बने हुए हैं? क्या मेरे पास इंटरनल सेल्स टीम है? ब्ला 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 ब्ला। ओके, क्या मैं अवेलेबल हूँ क्या? क्योंकि अगर आप अवेलेबल हो, ब्रिटानिया से कोई भी आपको बिस्किट का पैकेट बेचने नहीं आता, वो बस आपको अवेलेबल करा के देता है, आप खुद खरीद लेते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस हु आर अवेलेबल आर ऑल्सो स्केलेबल। अब कुछ लोग बताएंगे सर मेरे पास तो सेल्स टीम ही नहीं है, हमको कभी सेल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको शायद सेल्स टीम की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि आप स्केलेबिलिटी के बारे में सोच नहीं रहे थे, आप सस्टेनेंस के बारे में सोच रहे थे, और सस्टेनेंस तो आराम से चल रहा है ना, घर गाड़ी बंगला सब कुछ है। सो जब आप स्केलेबिलिटी के बारे में सोचोगे तो एक वर्ड आना चाहिए, अवेलेबिलिटी। माय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल अक्रॉस। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस, how do I satisfy, what is the process of customer satisfaction? मेरे पास कोई CSI जिसको कहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, ये कोई स्कोर कार्ड है क्या जिस वजह से मुझे ये पता चलता है कि मैं जिस कस्टमर को सर्विस दे रहा हूं, अब मैं प्रोडक्ट बना के दे रहा हूं, मशीन बना के दे रहा हूं, या नॉर्मल सर्विस कर रहा हूं, इंटेंजिबल सर्विस, बट क्या मेरे पास उसका CSI है?
ओके नेक्स्ट पूछना पड़ेगा क्या मेरे पास मेरे परचेस का प्रोसेस राइट है, क्या मेरे पास यू नो इफ आई कैन आई डू आई हैव अ लॉजिस्टिक्स प्रोसेस दैट इज राइट, डू आई हैव अ कस्टमर डिलीवरी प्रोसेस दैट इज राइट, डू आई हैव द क्वालिटी चेक दैट इज राइट, डू आई हैव द ऑडिट दैट इज राइट, डू आई हैव द अप्रेजल सिस्टम दैट इज राइट। ये इंटरनल प्रोसेसेस है दोस्तों, इन्हीं इंटरनल प्रोसेसेस के बलबूते पर कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, एंड दैट इज वेयर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कम्स इन पिक्चर व्हिच इज कस्टमर। ओके how to achieve our vision, how we should be appearing to our customers, मेरे कस्टमर ने मेरे को कैसे देखना चाहिए, how should he believe in me, how should he look at my brand। अगर हमारी संस्था, जैसे हम SIL के बारे में बात करते हैं, हमारी संस्था की तरफ लोग जब देखें तब ऐसे ना देखें कि ये कोई कंसल्टिंग कंपनी है, ऐसे देखें ये ट्रस्टफुल लोग हैं, these are trustworthy people, ओके यू कैन ट्रस्ट देम। और हमारी सारी एक्टिविटीज, आप यकीन नहीं करोगे, सारी एक्टिविटीज, आप YouTube चले जाइए, आप Google चले जाइए, आप Facebook चले जाइए, आप हमारे ऑफिस में आके चेक कीजिए, आप हमारे एम्प्लॉइज से बात कीजिए, आपको ये एक कॉमन पैरामीटर दिखेगा कि यू विल से वेदर यू वर्क विद अस और डोंट वर्क विद अस, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू विल ट्रस्ट अस। नाउ दैट इज अ क्राफ्टेड थिंग, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू फॉर आवर कस्टमर्स। Okay, the last piece is where finances come in picture, where to succeed financially, how should we appear to our stakeholders? Stakeholders कौन है? हमारे एम्प्लॉइज अपने stakeholders हैं, vendors, customers, हमारे बैंकर्स अपने stakeholders हैं, तो उनको संस्था कैसे दिखनी चाहिए और उसके ऑब्जेक्टिव क्या। अब आ गया नंबर। ओके सो इमोशन से शुरू करो और इकोनॉमिक्स तक कट करो। सो अगर आप ये पूरे सर्कल को देखोगे, इसका मध्य बिंदु ये आपका विजन और स्ट्रैटेजी है, इसका मध्य बिंदु आपका विजन या स्ट्रैटेजी है। सो इसीलिए, और इसी को मैं और डिटेल तरीके से भी समझाता हूं इन द प्रोग्राम दैट आई डू कॉल्ड बर्निंग डिजायर, बट इस तरीके से ये काम होता है। जैसे फाइनेंशियली BHAG का मतलब बिग हेरी ऑडिशियस गोल। ओके सो माय फाइनेंशियली मेरा गोल क्या है, पैसे का गोल क्या है, कस्टमर वाइज मेरा गोल क्या है, इंटरनल प्रोसेस वाइज मेरा गोल क्या है, और लर्निंग एंड ग्रोथ वाइज मेरा गोल क्या है। अगर ये 4 बिग गोल्स आपके हर पैरामीटर में आए, तब आप उसको बाइफरगेट करके माइलस्टोन्स और एक्टिविटीज में डाल सकते हैं। आई रिपीट, जब आप फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल, लर्निंग एंड ग्रोथ, तब आप अपने सारे पैरामीटर्स के अगर बड़े गोल्स बना लेते हैं, तब जाके उन्हें, बट कौन सी तरीके के गोल्स चाहिए, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस, लर्निंग और ग्रोथ। नाउ द बिग हेरी ऑडिशियस गोल का मतलब क्या है? What are you deeply passionate about? What is your company deeply passionate about? We are passionate about contributing right to the MSME in the country. 18,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन और कंसल्ट किया है हमने, alright? And nobody will come to you and say कि यार आपने सही काम नहीं किया. Why? Because we have done that with close-hearted, open heart, and more importantly, if we have done a mistake, we've accepted that mistake. We are human beings as well. So we do what we passionately love about. What drives your economic engine? So 18,000 लोगों को train करने के बाद, we are a company today. I may have started alone, but we are a company today. There is a staff sitting, there is the works that is getting done. There are tons of clients who are working with us. How is your economic engine? Profitability कैसे बना रहे हो? And second, what can you be the best that the world needs you to be? So can you do the best in your vertical, in your stream, in your industry? Can you reach a pinnacle of something? That is something called as the big hairy audacious goal. और इसे 3 चीजों में डिवाइड किया है, एक इकोनॉमिक्स, इमोशंस और सोशल स्टेटस। इकोनॉमिक्स, इमोशंस और सोशल स्टेटस, तब जाके एक बड़ा गोल तैयार होता है। ओके, नाउ हाउ मेनी ऑफ यू, yes, no problem, Ravinder ji, absolutely fine. Yes, Dr. Jagdish, then it becomes your what is your USP? Your USP is something that you will give to your customers.
तो ये कब यूएसपी बना पाओगे आप डॉक्टर जगदीश? व्हेन यू वर्क ऑन योर इंटरनल प्रोसेसेस। इंटरनल प्रोसेस का गोल बनाओ, अपने आप कस्टमर के लिए यूएसपी बन जाती है। ओके, दिस इज अगर मैं इसे इफ आई वांट टू क्रिएट, गिव मी अ मोमेंट, हाँ, if I want to create this is an upward process, हाँ, this is an upward process, इसे समझ लीजिए। आपको पहला काम यहां पे करना है, खुद पे भी अपनी संस्था पे भी। जब नई चीजें समझ में आएंगी तो बदलाव क्या करना है तो समझ में आएगा, तो इंटरनली बदलाव शुरू हो जाएगा और उसके बेंचमार्किंग लिख दोगे आपकी कितना बदलाव करोगे इस साल, अगले साल, दूसरे साल। एक एक साल का ही प्लान करें, मैक्सिमम प्लानिंग आपकी 3 साल की होनी चाहिए, उससे ज्यादा न करें। फिर यू विल लुक एट द कस्टमर को क्या मिलना चाहिए और उससे फाइनेंशियल्स कितना आना चाहिए। अगर आपने टॉप डाउन अप्रोच किया, यू विल फेल एंड यू विल कीप स्ट्रगलिंग। देयर इज नो पॉइंट स्ट्रगलिंग। प्लीज यूज द राइट मेथड। You could be the best. I mean, this is for everybody. You could be the best, engineer in the world. But if you don't have a right screwdriver, no, आप एक खीला नहीं निकाल सकते दीवार से। तो सही टूल को सही तरीके से यूज करें तो growth is 100% destined. Okay. Now my question to you here is, how many of you would want to learn about these tools of drafting your vision, drafting your strategy, learning how to do that? How many of you would want to do that? Go ahead. Quickly respond to me on my yes, it will be available it's on YouTube. It will be available, right? How many of you would want to learn this quickly? Because I'm going to now share with all of you कि मैं एक लाइव मैं जब लाइव प्रोग्राम करता हूं, इट्स कॉल्ड बर्निंग डिजायर, उसमें होता क्या है। ओके, उसमें होता क्या है। सो गिव मी अ मोमेंट। बवेजा साहब, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस। अब आपको एग्जीक्यूशन पे जाना है, जो हमारी बात हो चुकी है, right? But you're more than welcome. I'm more than happy for you to be there. No problems with that. Give me a moment. I'll just open and show it to you. Give me a moment. Just give me a moment. So, मैं आपको आपके चैट बॉक्स पे भेज रहा हूं ताकि आप अपने वक्त में भी इसे समझ पाए। YouTube के यूजर्स के लिए भी और Facebook के यूजर्स के लिए भी मैं ये मैं दे रहा हूं इन टर्म्स ऑफ यू कैन डेफिनेटली लुक एट इट। मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आप इसे सही देख पाते हो, सही कर पाते हो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन एक्चुअली ग्रूम योर कंपनी टू अ बिगर कंपनी। Okay, so do make sure that you are watching this video on balanced scorecarding on YouTube. मैं आपको 17 मिनट का लगभग वीडियो है, आप जरूर देखिए क्योंकि और डेप्थ में मैंने ये समझा दिया है सबको। Now, fundamentally, what you have to ask yourself is one thing. If you wish to learn, start learning, because that's the basic parameter for you to scale the company. So here you go. I'm going to share this with you now. Okay, it's a लाइव प्रोग्राम माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे हम इंटरैक्ट करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। ओके, इट्स अ लाइव प्रोग्राम। ये सारी जो डिजिटल है ये आपको फ्री ऐसे ही मिल जाएगा। प्रोग्राम का ओवरव्यू देखिए, करिकुलम देखिए। करिकुलम में देयर आर 1 इज योर जर्नी फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, जिसका मतलब क्या है कि हम कहां जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। ओके, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स, मतलब SIL जब हमने शुरू करी, लगभग 48 लोगों के पास हम गए, वो इंटरव्यूज हमने कंडक्ट करे, उनके साथ बैठे और वो केस स्टडीज लिखी गई हैं, जो केस स्टडीज आप अपना काम किस तरीके से कर सकते हो ये बता रहे हैं। आप अपनी बिजनेस कैसे स्केल अप कर सकते हो, क्योंकि लोगों ने किया है। अच्छा, ये कोई यूएस की, कनाडा की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की स्टोरी है, ये नागपुर की स्टोरी है, ये उन्नाव की स्टोरी है, ये पुणे की स्टोरी है, ये कहीं लखनऊ की स्टोरी है, ये चेन्नई की स्टोरी है। ये ऐसी बिजनेसेस हैं जो हमारे साथ यहाँ पे स्केल अप हुई हैं। ओके, सेकेंड,
वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई जाती है, वैल्यूज कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो एक साइंटिफिक एक्सरसाइज है जिसके द्वारा आप वैल्यूज आइडेंटिफाई कर पाओगे। उसके बाद हम विजन बिल्डअप करते हैं, क्योंकि वैल्यूज से ही विजन बाहर निकलता है। देन वी स्टार्ट मेकिंग योर बिग हेरी ऑडिशियस गोल, जो हम बात कर रहे थे। देन वी टॉक अबाउट स्केल अप करते वक्त रिस्क कौन से होते हैं और कैसे मिटिगेट किए जाते हैं। देन वी टॉक अबाउट किस तरीके से हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, कस्टमर्स को, बैंकर्स को, क्योंकि बहुत बार पैसे की जरूरत नहीं होती, बहुत बार स्केल अप करते वक्त आपको इतना कन्विंसिंग होना पड़ता है आपके विजन के लिए दैट यू हैव टू सेल योरसेल्फ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड the outcomes that we get here is these. Okay, so implementable process of next 3 years, आपका कॉर्पोरेट डेक रेडी हो जाता है कि आप करना क्या चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। आपके 4 पर्सपेक्टिव्स ध्यान में आ जाते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के, फाइनेंशियल्स, कस्टमर्स, लर्निंग एंड ग्रोथ एंड प्रोसेसेस। Attain clear cut goals of what you want to achieve. Write down your big hairy audacious goal, which is also called the mission of the company. Clear roadmap of scalability. Of course, you will be talking to me if you find that I'm somebody who can help you and guide you doing that. With over last 10 years doing this for people, I think I do have a certain amount of wisdom that I can share with you, and you can be a part of this. So all of this is there. You can also look at the free power sessions that we've already created. You can go through it and you can just register. The program is going to start. My team is going to put the dates, and I'm wanting everybody to please respond of how many of you would want to be live with me. Go ahead. 10th August the program starts. Go ahead. 10th August the program starts. 3 years of clear roadmaps, 12 hours of live workshop. There is a payment link that has been given there. My dear friends, don't use this payment link. Please go to the SIL University page, and I'm sending you the page, and use that. Okay, for all your payments. So you can do that. Thank you, Jitendra ji, and thank you so much for mentioning the yes. You could just link, click. Thank you, Himanshu. Thank you very much. You're more than welcome to be a part of the journey, and let's work together to make a better India, a better business, right? So how many of you more? If you have any questions, I will be here for the next 5 minutes. If you have any questions, just raise your hand, and my team will unmute you, and you can talk. Go ahead. Please raise your hand. Yes, Himanshu. Okay, sir. Okay. Anybody else who has any questions, please go ahead, and I'm more than happy to answer them. Shubham ji, go ahead. You can unmute yourself and talk. हेलो. Yes, Shubham ji, go ahead. सर, क्या ये सिर्फ बिजनेस पर एंटिटीज के लिए ही है या कुछ इनके लिए भी है जो डे टू डे जॉब करते हैं उनके लिए भी है? ऐसे सारे लोगों के लिए जो people who want to grow, whether they are in business or whether they are in jobs or wanting to start their own businesses, all of them can come. We have certain batches that we create, जिसमें सारे लोग होते हैं. इस प्रोग्राम में सारे लोग होते हैं. इस लाइव सेशन में सारे लोग होते हैं. Anybody can do this because everybody wants to scale now. Whether you are in job or business, it doesn't matter. The methodologies are same. Unfortunately, जो businesses 10 crore, 25 crore, 50 crore के हैं, उनको लगता है ये नहीं है, हमारे लिए नहीं है. But honestly, people of 100 crores turnovers also sit through this program, and people of startup mentality also sit through this program, because science remains science. It doesn't change. There are basic rules. The basic rules remain the same. Okay. So whether you are a 100 crores person or you are just starting off, the 4 perspectives are 4 perspectives. They have not changed for the last 60 years. Okay. Yeah. Thank you, Shubha. Thank you. Okay. Thank you, sir. Jitendra ji, go ahead. You can talk now. सर, इन केस कभी मिस कर देते हैं आपका वीडियो या मतलब लाइव सेशन, देन LMS पे होता है, आपको मिल जाएगा. No problems. You get access. No problems. My team does that for you.
Thank you very much. Anybody else? Anybody else who has a question? I have next 1 minute that I'm going to be there. The moment it's 4, I'll drop off. Very important element. Let me also invite you. Let me also invite you to Inspiring India Movement. And you all can be live. I'll be live. Thank you, Shubhamji. Thank you. You, Kiran, thank you very much. Thank you very much. We can all go. My humble request to all of you would be, if you are wanting to, क्योंकि maximum 15 लोग होते हैं, 15 लोग होते हैं इस batch में. Okay, so seats generally get filled. So my recommendation to you would be book your seats quickly and register, because we are not asking for a lakh, 2 lakh, 5 lakh रुपए का पैसा. It is 9,999. Family के साथ खाना खाने जाए तो भी खत्म हो जाती है. So my humble request to all of you is, you can go ahead and book your seats quickly. There are only 15 seats that we book. I mean, few of them would be already booked, but be there, because I'm 100% sure that it will benefit you as a businessman, as a human being who wants to scale your life and business. So go ahead. And one more thing, I definitely invite आप हमारे sales team से जरूर बात कीजिए, उनसे पूछिए Inspiring India Movement क्या है, और अगर आप इसे रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए. ओके, बैलेंस स्कोर कार्ड का वीडियो, बिकॉज आप यहां तक अब तक रुके हो, मैं आपको बैलेंस स्कोर कार्ड का वीडियो, पूरा वीडियो देने वाला हूं. Absolutely, you know, that's something that will definitely help you. Just give me a moment, I'll do that for you. और ये आपका बैलेंस स्कोर कार्ड का वीडियो जो है, ये आपके साथ आ रहा है अभी. So you will have this. Please look at the chat box. चैट बॉक्स में आपको YouTube का पूरा बैलेंस स्कोर कार्ड 16-17 मिनट का वीडियो मैंने पूरा समझा दिया है, एंड आई एम 100% श्योर कि आप इसे सही यूज कर पाएंगे. सो ऑल द बेस्ट एंड डू वेल. सी यू इन द प्रोग्राम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नाउ देयर इज ओनली लास्ट थिंग दैट इज रिमेनिंग, माय डियर फ्रेंड्स. आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेक द फीडबैक. सो दिस इज द फीडबैक दैट आई एम टेकिंग. पोल लॉन्च हो चुका है. 2 सवाल है. Connect me back. I would want to learn from Dr. Yogesh Pawar. Simple feedback है, yes or maybe. Go ahead. जितने भी लोग इसे रिस्पॉन्ड करेंगे yes बोल के, उतने लोगों को मेरी टीम कॉल करेगी. हम जनरली पुश नहीं करते, उतने ही लोगों को हम कॉल करेंगे और उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हमारे प्रोग्राम में होगा. So go ahead. If you're writing maybe, there's no problems. If you're writing yes, there's also no problems. Go ahead, and I'm waiting for your responses. Go ahead. All right, I'm going to move out now. My team is here. You may all want to enjoy the evening that is there, and I'm going to play the balance scorecard video right now for you, so that you can go ahead and listen. Something. Good evening, everybody. My name is Dr. Yogesh Pawar, and I'm the founder of School of Inspirational Leadership, a consulting and a training organization focusing only on MSME scaling up structures. दोस्तों, आज मैं आप सबसे, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जो व्यावसायिक है और अपना बिजनेस स्केल अप करना चाहते हैं, स्टार्टअप नहीं स्केल अप करना चाहते हैं, उन सारे व्यूअर्स के लिए ये वीडियो है. मैं आपको एक ऐसा मॉडल बताने वाला हूँ जो हालांकि बहुत जगह यूज होता है, बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है, बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स और मल्टीनेशनल कंपनीज इसे यूज करते हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एमएसएमई या एसएमईज के लिए वो रेलेवेंट कैसे. मैं आपको समझाने वाला हूँ आज, एंड दैट इज समथिंग that will help you understand what are the 4 levers that you need to turn, okay, which will help you to move forward. Hey, hi everybody. Sorry, I know I'm jumping in my own video. मैं खुद ही की वीडियो में जंप कर रहा हूँ, but after this master class on हो चुके हैं, आप नीचे दी गई लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं और इस ब्यूटीफुल सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं. अगर आप मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, आप डेफिनेटली इस मास्टर क्लास का आनंद भी लीजिए और सीखिए. I'll see you in the master class. Thank you. Enjoy the video, right? Bye. तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ग्रोथ स्ट्रैटेजी कैसे लिखी जाती है
कौन से संदर्भ है जिसे ध्यान में रख के वो ग्रोथ स्ट्रेटेजी लिखी जाती है, वही इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। Now, I'm going to share with you the 4 elements that you need to focus on. This side, you're looking at customer perspective, you're looking at financial perspective, you're looking at your process perspective, and you're looking at the learning and growth. And on your right hand side, that is the strategy map. Now, in this entire process, it all begins from bottom and rises to the top. So it has 4 perspectives basically, and those 4 perspectives we will look at it as the first ground perspective is learning and growth. एक संस्था जब बड़ी होती है या संस्था क्यों बड़ी होती है, क्योंकि वहां पे काम करने वाले लोग ये हमेशा सीखते रहते हैं, नई आइडियाज, नए सिस्टम्स, नए प्रोसेसेस, ये हमेशा कंपनी में आने जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे, it will not fuel the growth of the company. So the fuel in your business ideally is not money, it is learning and growth perspective. Okay, in the learning and growth perspective, on ground 1 there comes process perspective. On ground 2 it comes the customer perspective, and ground 4, which is the output, comes the financial perspective. ये चारों perspectives आप जब देखोगे तो कुछ चीजें हैं जो साथ में चलती हैं, and you and I need to realize and understand how it works. So at your ground zero, if you look at this ground zero here, what is it going to focus on? It is going to focus on how is the culture of the company. So that's the point number 1 there. It's called culture of the company. Okay, कि किस तरीके की culture बनाना चाहते हैं. That is highly dependent on एक entrepreneur का vision and his mission and his value system. उसी तरह का कल्चर बनेगा एक संस्था। The second element is किस तरीके के लीडर्स आप अपनी कंपनी में चाहते हो, which means किस तरीके के नेतृत्व, किस तरीके का जो रिस्क ओरिएंटेशन है वो आप कंपनी में चाहते हो, and that's called the leadership aspect of it. The third aspect of it is alignment. सारे लोग एक दूसरे के साथ किस तरीके से अलाइन है, that is the third perspective of ground zero, जिसे alignment कहते हैं. And the fourth perspective is called working together, which is working in team. कैसे ये सारे लोग एक साथ मिलके काम करते हैं to produce results. So I repeat, ground zero में 4 चीजें जो जरूरी होती है. First